सो गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र ह्यूमन माइंड ब्रेन सिस्टम के ऊपर आपसे बात करूँगा। तो मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया था आपसे कि जब एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं तो एक योर माइंड ब्रेन सिस्टम फॉलोज अ सर्टेन प्रोसेस, और अगर वो प्रोसेस आपने ठीक से एग्जीक्यूट किया तभी आप आंसर तक पहुंच पाएंगे, और अगर वो ठीक से नहीं हो पाया तो बीच में कुछ गड़बड़ रहता है। आइए एक बार इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक क्लास है, उस क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें से कोई स्टूडेंट है ए और एक दूसरा स्टूडेंट है बी। सपोज कीजिए कि एग्ज़ाम हुआ तो ए जो है वो 100% मार्क्स लेके आया, पूरा क्वेश्चन उसके सही थे, और बी जो है मान लीजिए कि 60% मार्क्स लेके आया। तो क्लास टीचर वही हैं, बुक्स वही हैं, क्वेश्चंस वही हैं, इनपुट सेम है दोनों स्टूडेंट्स के लिए, तो रिजल्ट अलग क्यों है? क्योंकि ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, उसको अगर हम माइंड ब्रेन सिस्टम की टर्म में समझें तो ऐसे मान लीजिए दिस इज़ द स्टूडेंट, दिस इज़ द इनपुट एंड दिस इज़ द आउटपुट। तो ये मान लीजिए स्टूडेंट 1 है और ये मान लीजिए कोई स्टूडेंट 2 है। दिस इज़ इनपुट, दिस इज़ आउटपुट 1 एंड दिस इज़ आउटपुट 2। So here input is same, teacher is same in the class, books are the same, questions are the same. I assume that this is true. So why the output is different? So certainly there is something concerned with the system, or more particularly the information processing system of the student. So we can say intuitively that the information processing system of first student is better than that of second. So now the question comes that is it possible that B can also achieve 100% marks? And if possible, then what is the process of that? So I will try to explain, to elaborate certain processes by using which B can score equivalent to A. So let's discuss that thing further. So for that, we must understand that our mind-brain system, internally what we feel ourselves is just the mind-brain system, and this mind-brain system is following an algorithm. You can say that algorithm or the neural patterns. So suppose that this was the time when teacher was taking the class. Suppose this is the teacher and teaching both the students. So this is your student 1 and this is your student 2. So teacher is transferring information to the board, and teacher expects this information to be introduced in the mind-brain system of the students. Now this information is same for both of them, the input is same for both the students, but differences may be when this information, so we can say that the sensory input over here, sensory input is same for both the students, but it will reach to the sensory memory. Now here comes the role that when the sensory input is fed to the sensory memory, it depends on the attention or the focus level of the student, that what is the focus level. Suppose that focus level of student 1 is better than student 2. So if focus is better, then the sensory information or sensory memory will transfer the information to the short-term memory precisely. Now another thing is this short-term memory will be transferred to the long-term memory, and here attention also plays the role, and often it is mediated through repetition or elaboration. This is one and the same thing. So when sensory input is put to the students, then there are 3 levels or 3
key steps. First is transfer from sensory input to the sensory memory, sensory to the short-term memory, and short-term to the long-term memory. But there is another important process, which is the reverse process, which is the retrieval of information from the long-term to the short-term, and from short-term to the sensory memory. So that the reverse process is also there. And this reverse process is often very painful initially. आपने देखा भी होगा कि जब हमसे कोई पूछे कि हमने क्या पढ़ा है तो बहुत तकलीफ होती है, ऐसा लगता है भीतर से जैसे कुछ चीज़ दुखती है, तकलीफ सी होती है, क्योंकि उस समय मेमोरी एक्सेस हमारे चेंज होते हैं, न्यूरल लिंक्स, न्यूरल पैटर्न्स बनते हैं. लेकिन अगर ये न्यूरल लिंक्स एक बार हमें डेवलप हो गए तो दोबारा हमारा मन जो है, हमारा जो न्यूरल पैटर्न, एक बार इसमें दिक्कत होगी. सपोज ये अलग अलग जगह के न्यूरॉन्स हैं, नर्व सेल्स हैं, तो जब ये फर्स्ट टाइम इंटीग्रेट होंगे टू फॉर्म द न्यूरल पैटर्न, तो तभी जाके हम एक प्रोसेस को सीख पाएंगे. एक सोचे कि इंफॉर्मेशन को ह्यूमन माइंड ब्रेन सिस्टम में इंसर्ट करना और वहाँ से उसको रिटेन करना सीख पाएंगे. गिवन दैट वी रिपीट द प्रोसेस सर्टेन टाइम्स, and after repetition this neural link or the neural pattern gets stronger, and when the neural pattern gets stronger it's very easy to retain things. So हम ये कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट 1 है उसके जो न्यूरल पैटर्न्स हैं ये स्ट्रॉन्ग हैं, स्ट्रॉन्ग प्लस कॉम्प्लेक्स हैं स्टूडेंट 1 के एज कंपेयर टू स्टूडेंट 2. अब स्टूडेंट 2 में क्या हुआ होगा कि जो इसके न्यूरल पैटर्न है, मैं दोनों को दिखा देता हूँ, इसके न्यूरल पैटर्न वीक होंगे, मतलब थोड़े थिन होंगे तो इसमें से ये रिटेन नहीं कर पाएगा. जब इससे पूछेंगे, जब ये प्रश्न हल करेगा, तो क्योंकि इसके न्यूरल पैटर्न्स थिन हैं, वीक हैं, सिंपल हैं, तो ये रिटेन नहीं कर पाएगा. ये इमोशनली इसको अलग अलग विचार आएंगे, उलझ जाएगा चीज़ों में, भावनाएं इसको विचलित कर देंगे, तो ये पैटर्न क्योंकि नहीं बना पाया. तो कुल मिला के कारण है बच्चों की परफॉर्मेंस के पीछे उनके माइंड ब्रेन सिस्टम के न्यूरल पैटर्न्स. और अगर किसी मैकेनिज्म से, बाय वर्च्यू ऑफ सम मैकेनिज्म, वी आर केपेबल टू ट्रांसफॉर्म द न्यूरल पैटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स, देन सर्टेनली द रिजल्ट्स कैन बी इम्प्रूव्ड. And it is the only criteria which can explain the performance, relative performance of the students. So the sharp students learn how to develop strong and complex neural patterns, and obviously they bear the brunt of emotional conflicts, emotional challenges. They bear it bravely. So because of that, they are able to develop strong and complex neural patterns. But on the other hand, if a student is not able to bear the brunt of negative emotions induced while he is developing the neural patterns, then his neural patterns will be weak and simple. So he will not be able to retain things effectively. That explains the difference between performance of the students. So if by some mechanism we can transform this neural pattern to this pattern, then certainly the performance can be improved. And this is done by revision. What a sharp student or better student do is he repeat these processes. He transfer information from sensory to short term to long term, and he retrieve that. He repeat this process again and again by doing the rehearsal, until and unless he is able to retain most of the information. That is the difference between a good student and a bad student. A good student process is same for both, but a good student learn how to coordinate between the 3 memories or the 3 minds, and he is quite able to adapt to the high pressure challenges and is able to retrieve information in spite of heavy pressure in the exam. So this is the only reason between a successful and an unsuccessful student. So if we can transform the neural patterns, certainly the efficiency of the students, the performance of the students can be improved. So regarding that, I'll talk in the next lecture. Thank you. Have a nice day.